in last video we talked about what exactly are promises and क्या different stages होती है promises की, like pending, resolved and rejected. Okay, in this video we are going to talk about like हम लोग promises को implement किस तरह से कर सकते हैं. Okay, so whenever you are trying to implement any promise, always remember that you will be using a promise constructor function. Okay, it is extremely important, okay, to always use the promise constructor function. Okay, so कंस्ट्रक्टर फंक्शन यू कैन से कि जब हम लोग एरे भी क्रिएट करते हैं, सो वी डू दिस थिंग, राइट? सो न्यू एरे, न्यू ऑब्जेक्ट, एनीथिंग दैट वी क्रिएट, न्यू स्ट्रिंग, सो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, दीज आर कंस्ट्रक्टर फंक्शंस ओनली. You can also understand with this कि like whenever you are adding new keyword, then it is going to be the constructor function. It can be constructor function or like most of the cases, okay, inside JavaScript. So you have to remember that promise is a constructor function. Okay, now what is the structure of this function is that it is always going to accept two parameters. First is resolve, another one is reject. Okay, now how can we handle these two parameters is that if you remember that we talked about this thing कि जो promises होती है उसके अंदर 3 stages होती है. So like you can see over here, like promises has 3 stages: pending, resolved and rejected. ठीक है, सो पेंडिंग स्टेट वो वाली स्टेट होगी जैसे ही न्यू प्रॉमिस, द मोमेंट कोड एग्जीक्यूशन हैज़ एंटर्ड और रीच्ड टू दिस लाइन. ओके, द मोमेंट कोड एग्जीक्यूशन हैज़ रीच्ड टू दिस लाइन, योर पेंडिंग स्टेट इज स्टार्टेड, बिकॉज नाउ इट डजंट नो कि what is going to be the result, because it has started the execution. Now it doesn't know कि what is going to be the result मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, like this. Okay, so and in that situation अगर result आना होगा, so we will say okay fine, your promise is resolved. अगर नहीं होना होगा, then we will say that promise is rejected. Okay, so how can we implement this complete thing? Let's assume that for the time being I'll just create a simple plain variable. Okay, I say success is equals to true. कि अभी के लिए I'll just create a normal if else condition. If variable is true, we will say resolved. If variable is false, we will say rejected. Okay, so if success, so inside JavaScript we do not have to even write down or compare the value of success over here, because since it is set as true, so it will be considered as that this condition has passed. ठीक है, so over here what we will do is that we will resolve the promise. So I will say that promise is resolved, and this function basically takes in a string. You can pass a string, you can pass any data you want to pass over here. ठीक है, and I will say over here that promise is resolved. Okay, like this. If your condition is not matching or anything like that, then we are going to reject the promise. So I will say reject and then promise. Let me just close this thing. Yes, promise is rejected. Okay, like this. So you have completed your promise implementation. Okay, now what you are going to do is that how you are going to handle this. So we have over here, we have just created a structure of the promise. Okay, now we need to invoke this promise कि हम लोग इस function को finally invoke करेंगे, हम इसको call करेंगे, right? So this was the function definition, function declaration. Now we need to do the function invocation. Okay, so what we will do is that we will write down over here result dot then. Okay, so there are two things now कि जब भी आपको promise के resolve state को handle करना होता है, you will be writing a then keyword. Okay, dot then. Okay, if you are handling the reject state, you are going to handle that inside the catch block. Okay, you are going to handle inside the dot catch. So अभी जैसे हम लोगों ने dot then लिखा है, हम लोग dot catch भी लिखेंगे. So I will say over here, अब ये क्या करेगा यहाँ पे, let's say कि जिस तरह से आपने यहाँ पर रिजॉल्व एक्सेप्ट करा है, वैसे ही जो डॉट देन होता है वहाँ पर वो एक रिजल्ट और रिस्पॉन्स कह सकते हो आप. लेट्स बेटर कॉल इट एज रिस्पॉन्स. ठीक है, लाइक अगर आपका प्रॉमिस इज कम्प्लीटेड इन अ सक्सेसफुल सिनेरियो, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ करेक्ट रिस्पॉन्स. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस रिस्पॉन्स ओवर हियर, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आता है. ओके, अदर देन दिस नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द डॉट कैच ब्लॉक. So this is also proper structure to write down. ठीक है, like now we are writing dot catch. Okay, आप इस तरह से भी लिख सकते हो. Okay,
So now inside the catch you will not going to receive a proper response kind of response, right? आपको error receive होगा. So हम यहाँ पे accept करने के जो keyword लिख रहे हैं वो भी आप error लिख सकते हो. अब it's not necessary for you to write down response only or error only, okay? If you want you can write down XYZ also over here, ठीक है? But for the code readability it is better to write down these proper keywords जिससे आपको पता रहे कि yes, okay, fine, like when the dot then would be there I'm going to receive a proper correct response. When dot catch is going to be there I'm going to receive an error. Okay, so let's log it and then say error, whatever error we are going to receive. Okay, now what we are going to do is that we are going to run this file. Let's open the terminal. You can go over here and open terminal. Okay, I don't know like Windows में किस तरह से होता है, I don't remember the command, but yes, in like this you can open the terminal. We are going to execute this file. Okay, so we have this state. हमारे पास में यहाँ पे अगर success true होता है so we are going to receive promises resolved. अब since हमारे पास यहाँ पे true है so we are going to say it like it is resolved. अगर हम इसको false कर दें तो promise should be rejected. Okay, now I will run this file. I will say node promise.js because this is our file name. Okay, अभी सिंस करेंटली हमारा सक्सेस ट्रू है तो हम लोगों को रिजल्ट आना चाहिए promises resolved. So let's say enter and then say enter and your promise is resolved. Okay, so this is how your promises gets implemented. अब आप यहाँ पे जो भी whatever the string or whatever the object that you pass over here, whatever the value that you are going to pass over here, the exact same thing हमारा आपका यहाँ से वो print हो जाएगा. Okay, so now this is known as your entire promises. This is known as your resolve, reject, then catch. Okay, अगर आपको check करना है कि how the reject is working, so we just make it false. ठीक है, since this condition will not match, so it is going to get inside this reject thing. अब जब वो reject के अंदर जाएगा, so dot then में नहीं जाएगा. Okay, so अगर confusion है कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, you can make it like this also to understand कि हाँ then में ही जा रहा है, और यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइक कैच में ही जा रहा है या नहीं जा रहा है. ठीक है, लाइक दिस ऑल्सो. ओके, वेन एवर यू आर लर्निंग ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कंसिडर योर सेल्फ एज द डम्बेस्ट पर्सन पॉसिबल. ठीक है, जिससे आप बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को भी टारगेट करो कि मुझे क्या पता कैसे जा रहा है वहाँ पे. यू नो लाइक दिस, बी स्टबर्न एंड से लाइक नो आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. ओके, लाइक दिस, सो दैट जब आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट इट. ठीक है, सो नाउ वापस उसको रन करके देखते हैं हम. सो यू कैन से कि येस इट इज़ इनसाइड द कैच ब्लॉक ओनली एंड नाउ द प्रॉमिस इज रिजेक्टेड. जो भी आपने यहाँ पे रिजल्ट पास किया है वो रिजल्ट आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट एक और चीज़ होती है विच इज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने डॉट देन पढ़ा, एक डॉट कैच पढ़ा. ठीक है, हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ. ठीक है, एक और ब्लॉक होता है विच इज़ डॉट फाइनली. ओके, फाइनली में हम लोग क्या कहते हैं, वी ऑलवेज से दैट फाइनली ब्लॉक इज समथिंग जो हम एग्जीक्यूट करते हैं जस्ट टू प्रिंट की लाइक ओके फाइन, लाइक जो भी हमारे प्रॉमिस का रिजल्ट आए, वॉट एवर इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर प्रॉमिस, आइदर इट इज़ रिजॉल्व्ड और इट इज़ रिजेक्टेड, पेंडिंग, वॉट एवर इट इज़, बट इट इज़ completed. Okay, if you want to showcase this thing that promise is completed, you want to give a final completion of a message, kind of a message. Okay, in that case you are going to write down a finally block. So it does not matter कि आपका promise resolve होता है या reject होता है. Finally block is the only such block which will get executed in all the cases. Okay, either your promise is getting resolved or either it is getting rejected. Okay, so let's execute it. Catch promise is rejected and then promise is completed. कि आपका फाइनली ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया. अगर मैं इसको ट्रू कर देती हूँ विच इज़ माई रिजॉल्व्ड स्टेट. ओके, इन दिस केस ऑल्सो आपका प्रॉमिस पहले रिजॉल्व हुआ एंड देन योर प्रॉमिस इज कम्प्लीटेड विच मीन्स आपका फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो गया. सो दिस इज़ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉमिस. आप इस तरह से प्रॉमिसेस को यूज़ कर सकते हो. बहुत सिंपल होता है व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट. ठीक है, बट थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है कि हाँ हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव फंक्शन यूज़ करते हैं विच टेक्स इन 2 पैरामीटर्स, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट. हर एक रिजॉल्व और रिजेक्ट को हैंडल करने के लिए वी हैव सेपरेट फंक्शन विच इज़ देन एंड कैच. और फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो कि हमेशा एग्जीक्यूट होगा. नन ऑफ दैट मैटर्स कि लाइक इफ द प्रॉमिस इज गेटिंग रिजॉल्व्ड और द प्रॉमिस इज गेटिंग रिजेक्टेड. ओके, so that's it for the promises implementation basic. We'll deep dive about promises more in the next video. Okay, thank you so much for watching.